Good. हाँ चलो. One. Good. One, two, three. Good. Uday. Uday. Kiss it. Yes. Good. Good. Uday. सर आप म्यूट कर दें. Good. सर आप म्यूट कर दें उनको, हम सबको. ऑप्शन होगी सर. अच्छा जी, मैं एक सेकंड दूँ. आपकी अब सब लोगों ने अपने जो है वो Uday. No. म्यूट What was it? Good. Very good. Yes. Good. 3, 2, 1. Good. ओके. हो गया सर म्यूट. ओके, तो okay, last time we were discussing about the ray diagram of a plane mirror. Okay, and everyone listening to me, and can you see the page which I am sharing? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so our discussion last ended up at how the image is formed by a plane mirror. Was that understood by everyone? Yes, sir. Especially this diagram which I explained last time, that how in objects image is formed inside the mirror, and there were some important characteristics of the image formed by a mirror. As you can see in this diagram, and that the object is placed in front of the mirror at a certain distance, and the image formed is also at the same distance behind the mirror. It is an imaginary image simply because this object, the image formed in a mirror, is always imaginary. This is not the actual distance of the image from the mirror, because the mirror is only this one. Can you understand that? The mirror is only this one thick, and this distance of the image from the mirror is not a real distance. No, it's only a property of the mirror image, that the object formed is at the same distance in front of the inside the mirror as the object is placed in front of the mirror. The real object is this one. Okay,
and it is at a real distance. This distance is real because the object is real and the mirror is real itself. So these two, this object and mirror are real. So the distance between them is also real. But the distance between image and the mirror is not real because it's only an illusion. You can say that you see the image inside the mirror, behind the mirror, but this distance is not actually existent. Okay. So what you see your eyes here. So you are observing the rays coming from the distant image. Okay. And this distance is actually not the real distance, and you can see two imaginary rays being reflected back from the back surface of the mirror and reaching your eye, and you can see the image. Okay, and Yes, this is sir. and this is how I explained you last time as well, that how reflection helps you in everyday life to see objects around you, because our eyes can see only reflected light. The light rays reflected from a source or from an object can be detected by the retina of our eye. So today our discussion will be something about the lenses. And you must have learned about lenses, or you must have heard about lenses, that we have two types of lenses: the convex lens and the concave lens. Okay, so what is the difference between the convex lens and a concave lens? You can see this is uh, a convex, sorry, this is a convex mirror, not the lens actually. So we are sorry, we are not discussing lenses at the moment. We are discussing mirrors, convex mirror and yes, this is hmm. Okay, so our discussion is about mirrors. Okay, not at the moment about lenses. So this was the diagram above has shown you, which I explained you last time, that this is a plane mirror, simply a plane mirror. Its surface, its both sides are plane. They are not curved. Okay, this is a simple plane mirror which we usually use in our homes to in front of standing in front of like a dressing room or so. But this is a different type of a mirror. This is a convex mirror. This why it is called convex. You can see it's one of its outside surfaces are curved like this. They are curved outside. They are making some like a semicircular shape. This is a curvature. This is called uh, the convex side of the mirror. Okay, and what is the difference between a converging mirror and a diverging mirror? A convex mirror, as you can see in this figure, is usually a diverging mirror. Diverging means to diverge away from the
the point source of light or from the focus of the mirror. Is everyone understanding and in line with me? Everyone? Yeah. Because you people are have Yes, sir. muted. Yes, So sir. simply ask this time and again just to let me know that everyone is engaged with me at the moment. ठीक है जी? तो ये आपके पास क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है और इसकी ये जो आउटसाइड एक आउटसाइड सरफेस है, दिस इज कर्व्ड आउटसाइड, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ ये इसका सेंटर है, बिकॉज ये एक सर्कुलर शेप बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द मिरर और इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज ए डाइवर्जिंग, the diverging waves produced by the reflection of the plane wave from a convex mirror। एक ये देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट प्लेन वेव इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रही हैं on this mirror। These are simply straight plane waves which are striking the mirror, and after striking, when they, this is the front side of the mirror, the curved side, okay, and with you can clearly see कि जो वेव एग्जैक्टली फोकस पे जाके स्ट्राइक कर रही है, कैन यू सी दैट, नोटिस दिस वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक एग्जैक्टली इन द रिवर्स डायरेक्शन, ओके, एंड द अदर टू वेव्स, this one and this one, they are being reflected in different directions after striking the focus, because they are now seems to be diverging। diverge का मतलब क्या होता है, फैलना, outside, जिस तरह जस्ट लाइक जो सन रेज हैं वो हमें डाइवर्ज होती नजर आती हैं फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, मतलब अवे फ्रॉम द सोर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दे सीम्स टू बी स्प्रेडिंग आउट। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पैरेलल इंसिडेंट वेव्स इस कन्वेक्स मिरर की सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में आफ्टर स्ट्राइकिंग, बिकॉज मिरर्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट लाइट। ये जो इसकी साइड है ये इसकी पॉलिश सरफेस है और यहाँ से ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और जो रे बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस पे आके स्ट्राइक हुई थी, that is being reflected exactly in the opposite direction, the reverse direction in which it struck the focus, and other two waves have diverged in two different directions away from this focus, away from the focus। यहाँ पे एक और पॉइंट शो किया गया, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली मीन जस्ट लाइक द सेंटर ऑफ अ स्फीयर और द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो उसके सेंटर से जो in different directions the waves are being reflected back, okay, so you can see here that a convex mirror will always diverge the incident plane wave in all possible directions according to the curvature, this side, the curve of the mirror, okay, so it says plane waves reflected from a convex mirror appear to diverge from its focus। appear to का मीन्स, ये देखें ना पीछे से ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें नजर आ रही है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और हमें महसूस ऐसा होता है, वी फील लाइक that these are rays are basically coming from this source, actually they are not coming from this source, they are being reflected at this position from the lens, from here, and because this is the property of a mirror, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, that the image distance of the image distance from the mirror is the same as the object distance from the mirror।
So if you can see this distance and this distance, they would be equal. Similarly, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है रे, बेसिकली तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना, यहाँ से स्ट्राइक किया इसने, स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से हमें आती हुई महसूस हो रही है. Okay, so that is what it says. Convex mirrors are used as security mirrors in shops and in wide vision mirrors in cars as they provide a view of the wider area. क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं कन्वेक्स मिरर्स. आपने कभी देखा होगा, शायद तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं उनके अंदर जो मिरर लगा होता है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है. वो कन्वेक्स मिरर होता है बिकॉज उससे स्ट्राइक करके लाइट डाइवर्ज करती है और आपको वाइडर व्यू मिलता है. ज़्यादा दूर से आपको जो चीज़ें नजर पीछे से आती हुई नजर आ रही होती है. तो दिस इज वाई वी यूज कन्वेक्स मिरर्स. They are also used in conjunction with concave mirrors as secondary mirrors to produce telescopes and all reflecting optics. मतलब अभी हम आगे थोड़ा सा concave mirror के बारे में डिस्कस करेंगे. कनकेव मिरर सिंपली क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है लाइट को, एक पॉइंट पे फोकस करता है और उसी के ऊपर इकट्ठा करता है लाइट को. तो फॉर द मोमेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग कनकेव मिरर्स बट जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड how we use convex mirrors to diverge light. Is this basic idea is understood by everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. what we have learned now that there are two types of mirrors, convex and concave. Convex mirrors are diverging mirrors. They simply diverge light, मतलब वो light को spread out करते हैं in all possible directions according to the curvature of their surface, the curvature of their curved surface. ये outside curved surface होती है, इसको outside इसलिए कहते हैं कि ये जो इनका जो फोकस होता है पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उससे बाहर की तरफ साइड कर्व होती है. ठीक है ना, away from the source. So you can simply see how we can draw the ray diagram using the convex mirrors. ठीक है ना, how to draw the ray diagram of the convex mirrors. Look at this. Uh, this is a convex mirror. You have been shown only the curvature of this convex mirror. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और to draw the ray diagram for a convex surface, select the scale for your diagram. In the center of your paper, mark the center of the curvature of your mirror. क्या मतलब है कि जिस पेपर पे, जाहिर बात है रे डायग्राम हमने किसी पेपर पे ड्रॉ करनी होगी, तो एक उसका आप जो है वो सेंटर ऑफ योर पेपर के ऊपर आप एक सेंटर मार्क कर लें, एक पॉइंट मार्क कर लें और उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजिन कर लें. इस पॉइंट के ऊपर अपनी कॉम्पस रख के एक आप ड्रॉ कर लें सेमी सर्कल, जस्ट लाइक दिस. जिस आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना कंपास से, तो वैसे ही आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें. तो जो कि बेसिकली एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें जो कि बेसिकली आपके, या सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स द कन्वेक्स मिरर सरफेस. ठीक है ना, आपकी कन्वेक्स मिरर की सरफेस को शो करेगा. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पे आपने कंपास रख के एक इस तरह सेमी सर्कल या सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. The focus of a mirror lies halfway between the mirror and its center of curvature. अब ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक है ये फोकस पॉइंट. जो फोकस पॉइंट होता है ना किसी भी कन्वेक्स मिरर का, वो कहाँ पे होता है,
वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस नहीं कहते? हेलो, Yes, sir. किसी भी सर्कल के सेंटर से लेके जो उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस, Radius, sir. radius of the circle. And the half of this distance radius, this is called the focus of this mirror. यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये और ये डिस्टेंस, this one, they are equal to each other, and the focus is halfway or the midway of the radius. जो radius का mid point होगा उसको हम क्या कहेंगे? focus कहेंगे. So if this distance is f between the boundary and the focus, तो curvature, center of curvature से boundary का distance क्या हो जाएगा? 2 times of f हो जाएगा. Okay जी? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now after drawing this, what you will do, draw the incident ray as an arrow towards the surface. जैसे ये कुछ ने इंसिडेंट रे कहते हैं ड्रॉ करनी है. ये ड्रॉ करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मिरर ड्रॉ करने के बाद फोकस डिटरमिन करने के बाद you just need to draw an incident ray. Let's say this is an incident ray which is striking the curved surface at this point. It will be reflected back in this direction, and ये जो dotted line है ये शो करेगी इसका imaginary part. So it says draw the incident ray as an arrow towards the surface. Then at the surface, draw a dotted line from the end of the incident ray to the focus of the mirror. जैसे ये देखें, this is the end of the incident ray और यहाँ से reflected ray start हो रही है. यहाँ से एक dotted line आप सीधी draw करेंगे कहाँ पर? Focus तक. Now continue the line outward away from the focus. This line represents the reflected ray. ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई आउटसाइड, और इसको आगे कंटिन्यू करना है आपने कहाँ तक? इसको कहाँ? यहाँ ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. दिस वन इज योर डॉटेड लाइन इज इमेजिनरी रे. नाउ note how the line which bisects the angle between the incident ray and the reflected ray passes through the center of curvature of the mirror. This line is the normal to the mirror surface. ये जो लाइन है ये वाली, this is called the normal to the mirror surface, and this line must pass through the focus and the center of curvature. ये वाली भी ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक है. इधर वाली ड्रॉ इसका कर लेंगे तो वो इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगी. So it means it says note how the line which bisects the angle between the incident ray and the reflected ray. The incident ray और reflected ray के दरमियान एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है. passes through the center of curvature of the mirror. The center of curvature में से पास कर रही है ये. This line is normal to the mirror surface. ये mirror surface के ऊपर क्या है? ये normal. Now this is how simply you can draw the ray diagram for a convex mirror. एक और important बात, a ray which will be, जैसे ये इंसिडेंट रे थी, ये एग्जैक्टली इट वाज कमिंग पैरेलल टू द नॉर्मल. ये जो रे है ये इसके पैरेलल है नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये लाइन जो इंसिडेंट रे है, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द फोकस. ये अगर सीधी जाती जाएगी तो इधर जाती जाएगी ये in this direction. But look at a ray which is coming exactly parallel to the normal, but also if it is striking at the focus, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन. जैसे ऊपर यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाली रे, दिस रे, because it is striking at the focus point, and this is reflected back in the reverse direction.
Okay, ji? Has everyone understood Yes, this? sir. Drawing ray Yes, sir. diagram for a convex mirror. This is a very simple method. Three to four steps. Okay. Yes, sir. So now similarly you can draw any incident. अगर आपने यहाँ पे भी इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है ऐसे, तो यहाँ से वो स्ट्राइक करके डाइवर्ज हो जाएगी, उसको आप पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक या फोकस तक, सॉरी सॉरी फोकस तक तो एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास इस डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्टिव रे आ जाएगी। वालेकुम सलाम। जी जी। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Anyone, any question? No, sir. So this is how we can simply draw the ray diagram for a convex mirror. Now let's discuss something about some points about the okay. Now what are concave mirrors? जैसे कभी आपको बताया convex mirror में जो curved surface होती है वो outside होती है, outside surface curved होती है. But look at the difference here. In a concave mirror, there is a curved surface which is curved from inside. ठीक है? This is curved from inside. This is basically a curved surface which is curved from inside, and its outside surface, this one is a plane surface. So this is a converging lens. This is basically a converging, this is a concave mirror, and this is how it can see the process of how it converges light. Converge means it gathers light at a single point, at a single point, which is the focus point. Similarly, इसका भी एक center of curvature है. We are just running out of today's class time. In next 3 to 4 minutes, the class will be ended, and I am just winding it up here. Okay, तो गौर से सुनिएगा सब लोग. ये इंसिडेंट पैरेलल रेज आ रही हैं जी, ये जिस तरह पिछली डायग्राम में आ रही थी, ये इसका फोकस है. वही जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे फोकस होगा, और ये जो रे पैरेलल रे इस पे इंसिडेंट आ रही थी, ये रे यहाँ पे स्ट्राइक हुई आके, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे इकट्ठी हो गई, फोकस पे. Similarly, this one stuck at this position and it reflected back to the focus. And the ray which was incident on the focus exactly, वो यहीं पे इसी पॉइंट पे वो कन्वर्ज है. तो इसका मतलब है कि ये जो रेज हैं, जो केव मिरर का काम क्या होता है, इट कन्वर्जेस लाइट, इट गैदर्स लाइट, ये लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है. ठीक है ना? दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड कन्वर्ज. कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, फोकस करना. सो दिस इज बेसिकली कन्वर्जिंग लाइट. सो parallel waves incident on a concave mirror converge on its focus. Satellite dishes are concave because this shape allows them to concentrate a weak electromagnetic signal. मतलब जो सैटेलाइट की जो प्लेन जो मिरर्स होते हैं वो कनकेव मिरर होते हैं, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को एक पॉइंट पे इकट्ठा करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. Conversely, a source placed at the focus of a concave dish travels outward as a straight beam
that does not spread out or weaken as much as with the distance. बहुत सिंपल सी बात है ये. So microwave repeater stations are use concave dishes to bounce incoming waves to the next station. मतलब वो एक स्टेशन पे जो इनकमिंग वेव होती है उसको बाउंस बैक करते हैं, वहाँ पे कंकेव डिशेस लगाई जाती हैं, एक जगह पे फोकस करके उसको वो कंकेव करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट के ऊपर. ठीक है जी. Is this is a very simple one. This is not a very difficult idea at all, because अगर आपको कन्वेक्स मिरर का आइडिया समझ में आ गया है तो कनकेव मिरर में समझना बिल्कुल उसके अपोजिट है कि इसका काम है लाइट रे को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना. और सिमिलरली इसकी रे डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. जस्ट लास्ट कपल ऑफ मिनट्स वी आर गोइंग थ्रू. तो आप इसको देख सकते हैं कि यही इसका जो है वो फोकस पॉइंट है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है. जो इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक होगी वो इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. ठीक है. इस पॉइंट पर फोकस होगी और इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे फोकस होगी, ये इसकी रिफ्लेक्टिव रे है. सो यू कैन सिंपली ड्रॉ सर्कल एंड यू कैन डिटरमिन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस पॉइंट, और ये आपने देखना सारा कि इसकी इंसिडेंट रे कैसे ड्रॉ हो रही है. जी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? हेलो, Yes, sir. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ये दोनों किस्म के जो मिरर्स हैं, कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम और कनकेव मिरर की, बहुत सिंपल है, दोनों आपको समझ आ गई है सबको? Yes, sir. तो जैसे आपकी Yes, स्टडी, sir. अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में आपने पूछ लेना. ठीक है ना? Okay, sir. That's it for today's lecture. Nasir, just send me the roll call of everyone. Are you there, Nasir? Yes, sir, sure. I took the screenshot already. Okay, good. So see you in the next Zoom meeting. Okay, see you inshallah. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.